Hello guys, welcome back to another video. So I'm starting a new series for MPPSC prelims examination and this is unit 10. So I will be covering unit 10 of MPPSC pre-examination. Okay, so beginning with the first chapter of unit 10 or subtopic of unit 10, that is the Election Commission of India. Okay, so these are my handwritten notes. I hope you find them useful, so I will be discussing from them only. So without wasting much time, let's get started. And by the way guys, thank you for showing great support towards my video, and please make sure to subscribe. I'm just 8 subscriber away from reaching 110 subscriber. Now let's continue our discussion of Election Commission. Okay, so सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का एक क्वेश्चन जो सीधे सीधे बनता है कि इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इलेक्शन कमीशन मेंशनड. सो इट इज़ मेंशनड इन पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. नाउ article which mention election commission is article 324. okay, this is very important. PSC directly पूछ सकता है which article constitutes the election commission of India. So it is article number 324. now what does it say? It say power vested in election commissioner, power vested in election commission to conduct elections for parliament, state legislature जो कि विधानसभा होती है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. ओके, तो ध्यान रखना आपकी राज्यसभा इलेक्शंस आर नॉट डन और कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ ये एक आर्टिकल यहाँ पे रेलेवेंट है, दैट इज़ आर्टिकल 71. ये क्यों रेलेवेंट है? बिकॉज जो डिस्प्यूट्स होते हैं रिगार्डिंग इलेक्शंस ऑफ president and vice president, they are dealt under article 71 and these disputes can only be discussed in Supreme Court. okay, now looking at the composition of the Election Commission of India, so it is important. now so basically EC में कभी स्टार्टिंग में एक मेंबर था, फिर चेंज होके 3 मेंबर हो गए. so at present there are 3 members in the Election Commission of India. now let's look at in detail. the EC must consist of a chief election commissioner. okay, other election commissioners as the president may fix. so यहाँ से आपका सीधा सीधा एक क्वेश्चन निकल के आता है, who decides the strength of the Election Commission of India? so it is the president who decides the strength of the Election Commission of India. this is very important. नाउ ये भी कहने की ज़रूरत नहीं कि अपॉइंटमेंट्स आर ऑल्सो मेड बाय द प्रेसिडेंट. ओके, these are all mentioned under article 324. now another important thing that president may also appoint regional commissioners. okay, so these are appointed to help the state election commissioners. now the regional commissioners are also appointed by the president after consultation with the election commission. so this is important. PSC पूछ सकता है कि regional commissioners are appointed by president after consultation with whom? options can be state election commissioner, ECI, governor or anything else. so the correct answer would be Election Commission of India. so आप साथ ही साथ देख रहे हो कितने क्वेश्चन निकलते जा रहे हैं ना. now article 324 clause 5, it mentions the removal of process of removal of election commissioner. okay, और ये important था. और ऐसे ही article 324 consist of condition of service and tenure to be determined by the president. so आप देख सकते हो जो भी कुछ है election commissioners, election commission से related, it is done with the assent of president only. so president plays a very important role in connivance with the election commission. Moving to the history of election commission, this is important. Inception was in 1950. okay,
From 1950 to 1989 ECI functioned as a single member body only. Okay, सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता था, सिंगल मेंबर बॉडी. और फर्स्ट कौन थे? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वॉज सुकुमार सेन. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और PSC पूछ सकता है. नाउ आफ्टर द 61st अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, which was done in 1989, the one member ECI was changed into a 3-member body. इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में वोटिंग एज भी रिड्यूस हुई थी. ओके, नाउ इन 1989 who was the chief election commissioner? It was Peri Shastri. Now in 1990 again ECI was changed into a single member body, and this time TN Session was made the election commissioner of India, and his reign lasted till 1996. okay, इन्होंने बहुत रिफॉर्म करे थे एंड इनको आपको याद रखना चाहिए. ही इज़ वेरी वेल नोन फॉर हिज वर्क इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. लाइक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट भी इन्हीं के टेन्योर में आया था. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर हिम. इलेक्शन एक्सपेंडिचर भी इन्हीं ने उस पर रेगुलेशंस बनाए थे. नाउ इन 1993 अगेन द सिंगल मेंबर बॉडी वॉज टर्न्ड इनटू अ 3-member बॉडी. सो आप ये देख सकते हो पूरा एवोल्यूशन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का, फ्रॉम अ सिंगल मेंबर बॉडी टू अ 3-member बॉडी टू अगेन बीइंग अ सिंगल मेंबर बॉडी एंड नाउ कंटिन्यू टू बी अ 3-member बॉडी. नाउ looking at some important facts, one is shortest term of any election commissioner of India, so it is by V.S. Ramadevi. V.S. Ramadevi से PSC पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है दैट शी वॉज द फर्स्ट फीमेल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. तो मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है. MP कैडर से एक इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं, हिज नेम इज़ OP रावत. एंड फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर्स, ध्यान दीजिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर्स. So these were S.S. Dhanova and V.S. Sehgal. So these were the first election commissioners. Okay. Now rest of the part I am going to discuss in my next video, and I hope you liked the content, and if you learned something new, please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you.